Good morning, dear students. After the ionic bonding, the next topic, this is covalent bond, and in this video we will discuss about the covalent bonding. So dear students, see this diagram. Here you can see this is the part of covalent bonding. That means the meaning of covalent is sharing. When the electrons of two atoms share with each other, क्या शेयर करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल शेयर. दैट इज नोन एज द covalent bond. That time there is a formation of bond, and that bond is covalent bond. Here now see the definition. When the bond is formed between the two or more atoms by the mutual contribution and the sharing of electrons, then it is known as the covalent bond. Bond कैसे form होएगा? By the mutual sharing of two or more electrons, then it is known as the covalent bonding. If the combining atoms are same, then the covalent molecule is known as the homoatomic. Why? What is the meaning of homo? That means same. Homoatomic means made up of same atoms. For example, H2, O2, N2, Cl2, all these are the homoatomic. Why? Because they are made up of same atoms. If I am saying कि H2 है हमारे पास, then how many atoms of hydrogen here? 2. So वो दोनों ही क्या है? Same है. So this is homoatomic. And if they are different, means if the atoms which are sharing the electrons, if they are different, then the term is known as the heteroatomic molecule. And the formation of molecule which that time takes place, it is heteroatomic. Now see the bonding. Here is hydrogen having the one electron in its valence shell. This is also hydrogen having one electron in its valence shell, and this hydrogen needs one electron more to complete its octet. Also this hydrogen wants one electron to complete its orbital. So what they do? They will share one and one electrons. ये अपने वाला एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इसके साथ, और ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इसके साथ. एंड देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग टुवर्ड्स देम, एंड ड्यू टू दिस रीजन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस. द मीनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड. क्लियर? हियर इज H bond H. दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ single covalent bonding. Now next one is the formation of oxygen. Oxygen having the 6 electron in its valence shell. This one also having 6. अब इसको कितने चाहिए बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ शेयर करेगा. एंड हेयर इज शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस, एंड according to this the formation of double bond will take place. Clear? Similarly, one example of heteroatomic molecule, here is water, here is hydrogen, oxygen and hydrogen. Here is again sharing, and there is a formation of water molecule. So what is the covalent bonding? That means the sharing of electrons. Now next is the Lewis representation of the simple molecules. Now what are the Lewis structures? Now they having the following steps. Number 1, calculate the total number of valence electrons of the combining atoms. Firstly, what we have to do? We have to choose the element and we have to count the electronic configuration. After that we have to write down their valence shell electrons. That means, for example, we having sodium, they having only one electron in its valence shell, so we can write it as sodium. और उसके ऊपर हम कितने डॉट्स लगाएंगे? 1. For example, we having magnesium, its atomic number is 12. So how many electrons in its valence shell? 2, 8, 2. That means 2 electrons. So we can write it as magnesium, और उसके ऊपर कितने डॉट्स लगाएंगे? 2. Similarly, we having chlorine having 7 electron in its valence shell. So हम कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ड्रॉ करेंगे? 7. So firstly हमारे पास क्या है? Calculate the total number of valence electrons of the combining atoms. Then each anion means addition of one electron.
and each cation means removal of one electron. This gives the total number of electron to be distributed. Means firstly we have to clear anion फॉर्मेट कौन कर रहा है, एंड देन वी हैव टू क्लियर कैटायन की फॉर्मेशन कौन कर रहा है. आफ्टर दैट हमें क्या पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड. बाय नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास कंबाइनिंग एटम्स हैं उनको हम केमिकल सिंबल्स देंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आफ्टर प्लेसिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ सिंगल बॉन्ड, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में अकाउंट फॉर आइदर मल्टीपल बॉन्ड्स एज लॉन पेयर्स. मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे वो तो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे देन दे विल एग्जिस्ट एज लॉन पेयर्स. दो तरह के हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएंगे, एक बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर. बॉन्ड पेयर क्या होएगा, जब दोनों में म्यूचुअली शेयरिंग होगी देन दे विल फॉर्म द बॉन्ड पेयर. और लॉन पेयर क्या होएगा, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह जाएंगे देन दैट आर नोन एज द लॉन पेयर्स. नाउ दिस इज अ लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन. क्लियर, यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग है, शेयरिंग के साथ साथ जो हमारे पास अनअवेलेबिलिटी रह गई मीन्स बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं हुई, सो ये हमारे पास वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साथ साथ में बताए हुए हैं. देयर आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन. See them carefully. Here is one, and again here is ozone. See this, here is double bond, and here is formation of single bond will takes place, and here is one extra electron here. Similarly we having cyanide also. Clear, we having nitrogen dioxide also. So these negative charge will count in terms of their electrons. So this is about the Lewis dot representation and the covalent bonding. In the next video we will discuss about the formal charges.